Good morning, students. Today we are going to discuss photoelectric effect. Your topic will be today photoelectric effect. Electric photoelectric effect. The topic is going to we are going to discuss this, and this is the topic of atomic structure, and we are going to discuss in detail photoelectric effect. You can open in your book also in your material. The topic photo means here the verbal meaning of photo means that is the light. When we talk about this, your topic is photoelectric effect. फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बहुत ही सिंपल है, बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है। और if you see the word meaning of simply photo means light. Yeah, the photo means that is the light, and electric means simply there is a formation of current, or production of electron. Flow of electron is current. So ejection of electron with the help of light. Ejection of electron with the help of light. So you can have discharge tube. एक discharge tube हम यहाँ पे ले लेते हैं. That discharge tube will be have low pressure. इसके अंदर हमें जो लो प्रेशर की सिचुएशन क्रिएट करनी रहती है. On both the side there is electrodes are connected. One side left hand side आप यहाँ पे कैथोड लगा लो. Cathode is negatively charged. On opposite terminal that is going to be positively charged. That is going to be anode. That is your anode. And in between आपको सर्किट चेक करनी है, चल रही है एमीटर आप यहाँ पे सेट कर दो. Then we are having here battery, and this is the source. One is negative and the other positive. Now this is the left hand side we are having, this is the cathode plate. This is the cathode. और cathode की जो metal होगी that will be made up of most reactive metal. It is made up of more reactive metal. More reactive metals. Cathode must be made up of more reactive metals. More reactive metal कौन कौन सी होंगे? They are basically alkali metal like sodium, can be potassium, can be rubidium, can be cesium. Now, the inside that there is a low pressure situation. Now we are going to expose in the presence of light. आप यहाँ पे एक light का source ले लो, like sunlight. The radiations are coming from source to on cathode plate. Radiation is coming from source to cathode. As soon as ये जो radiation आ रही है, they are going to collide. ये जा करके cathode की plate से collide करेगी, got it? तो जैसे ये cathode की plate से collide करेगी, there is production of electron. Electron is going to be ejected. Electrons are going to be ejected from cathode plate, and they are going to move towards anode. And as soon as they are going to move towards the anode, जैसे जैसे वो anode की तरफ move करेंगे, तो your circuit is going to complete. Electron आपका move करेगा, and at the same time you can see deflection in the emitter. Emitter में आपको deflection मिलेगा. Here we can see that ejection of electron with the help of light. This terminal is known as anode plate. Anode is going to be positively charged, and cathode is going to be negatively charged. Ejection of electron with the help of light is known as photoelectric effect. तो बेटा बहुत ही सिंपल फिनोमेना है. फोटो मीन्स लाइट, करंट मीन्स होगा फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो बेटा बहुत ही सिंपल फिनोमेना है. रेडिएशन मीन्स लाइट, करंट. जो बेटा इंसिडेंट रेडिएशन हो दैट मस्ट हैव सफिशिएंट फ्रीक्वेंसी. व्हेन द radiation have sufficient frequency, sufficient
sufficient frequency strike when the radiation have sufficient frequency strike at the surface of when the radiation having sufficient frequency radiation have sufficient frequency strike at the surface of more reactive metal at the surface of more reactive metal like potassium, rubidium, or cesium. More reactive metal like potassium, rubidium, or maybe cesium. Ejection of photoelectron takes place. 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 This phenomena is known as photoelectric effect. Ejection of photoelectron takes place. This phenomenon is known as photoelectric effect. Photoelectric effect. Photoelectric effect. So this is the definition. आप definition को यहाँ पे note कर सकते हो. The definition is sufficient for your examination point of view. When the radiation having at sufficient frequency strike at the surface of metal, then more reactive metal there should be ejection of photoelectron takes place. Ejection of photoelectron takes place. This event is known as photoelectric effect. This event is known as photoelectric effect. So this is going to be, production of current with the help of light. As a whole, you can see the, finally, this is the device. You can create your current. You can generate the current with the help of sunlight, with the help of any source of light. So light radiation is going to collide. Light radiation is going to, collide at the surface of metal. And after that, when it is going to strike at the surface of metal, it will provide this energy. And ejection of photoelectron takes place. Ejection of photoelectron takes place. Ejection of photoelectron takes place. So when radiation having sufficient frequency and strike at the surface of more reactive metal, then ejection of photoelectron takes place. This event is known as photoelectric effect. This event is known as photoelectric effect. Now we are going to talk about the mathematical combination. Let I am having a metal surface. बेटा अब एक छोटी सी मेटल की कोई भी सरफेस ले लो. मेटल हमने ले लिया, मान लो पोटेशियम के मेटल ले ली. You know what will happen if it is potassium? No doubt, what will happen? All the metal having tiny atoms, and the center of atom is positively charged. An electron is going to be negatively charged. इसकी बात अगर करेंगे यहाँ पे जो बेटा इलेक्ट्रॉन होगा that is negative. A nucleus is positive. A nucleus is going to hold the electron. Nucleus इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ hold करके रखेगा. Now radiation is going to come. As soon as radiation is coming from any source, it must have certain frequency. Radiation is coming. This is the incident radiation. This is the incident radiation coming from any source. Incident radiation. This is the incident radiation going to strike at the surface of metal. This have frequency. इसकी बेटा frequency का मान लिया हमने new मान लिया. तो with the help of frequency you can calculate energy. आपको अगर इसकी एनर्जी निकालोगे तो यू कैन कैलकुलेट एनर्जी.
and that energy is going to be E is equal to h nu. फ्रीक्वेंसी अगर इसकी बेटा न्यू है तो इसकी एनर्जी कितनी होगी? when we talk about the energy, the energy must be equal to h dot nu. H dot nu. This is the going to energy of incident radiation. Let us take example कि ये जो हमारे पास एनर्जी है, that is how much? That is going to be 100 joule. As soon as रेडिएशन, ये हमारी जो रेडिएशन आकर के मेटल की सरफेस पे कोलाइड होने जा रही है, इट इज गोइंग टू कोलाइड एट द सरफेस ऑफ मेटल. इट विल डू सम सॉर्ट ऑफ वर्क, यू नो. तो वो जो वर्क डन होगा, दैट इज कॉल्ड वर्क फंक्शन. ये जो बेटा वर्क करेगी, इसको हम क्या बोलेंगे? दैट इज नोन एज वर्क फंक्शन. अब हमें सोचना है यहाँ पे काम क्या है बेटा. व्हाट काइंड ऑफ वर्क फंक्शन इज दिस? व्हाट इज द मेन पर्पज? रेडिएशन यहाँ पे क्या करने जा रही है? रेडिएशन जब मेटल की सरफेस से स्ट्राइक करेगी तो मेटल इज गोइंग टू बी हीटेड. यहाँ पे जो मेटल है हमारी, ये क्या हो जाएगी बेटा? हीट हो जाएगी. आफ्टर दैट, दैट एनर्जी इज गोइंग टू सफिशियंट. अगर वो एनर्जी सफिशियंट है तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्या होगा? इजेक्ट हो जाएगा. इलेक्ट्रॉन इज गोइंग टू बी इजेक्टेड अप टू सरफेस ऑफ मेटल. इफ एनर्जी रिमेन्स, अगर यहाँ पे एनर्जी बच गई तो दैट एनर्जी विल बी यूज एज काइनेटिक एनर्जी. यहाँ से इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन होगा. दैट इलेक्ट्रॉन इज नोन एज फोटो इलेक्ट्रॉन. क्योंकि ये लाइट से निकला हुआ है, दिस इलेक्ट्रॉन को हम स्पेशली नेमिंग करेंगे, दैट इज नोन एज फोटो इलेक्ट्रॉन. गॉट इट? So this is the radiation coming. This is the electron generated from metal surface. और ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो इट मस्ट हैव सर्टेन काइनेटिक एनर्जी बेटा. इसकी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी, व्हाट इट? काइनेटिक एनर्जी, हाँ, दैट इज गोइंग टू बी, दिस इज गोइंग टू बी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन. वर्क फंक्शन, वर्क फंक्शन को हम किससे शो करेंगे? W0 से. वर्क फंक्शन, इस वर्क फंक्शन, इस काम को करने के लिए हमें यहाँ पे एक एनर्जी की रिक्वायरमेंट है. व्हेन वी टॉक अबाउट द वर्क फंक्शन, वी नीड सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी. तो दैट इज नोन एज थ्रेशोल्ड एनर्जी. इस एनर्जी को क्या बोलेंगे बेटा? दैट इज नोन एज थ्रेशोल्ड एनर्जी. तो थ्रेशोल्ड एनर्जी द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड फॉर ejection of electron. That is known as threshold energy. What is the threshold energy? Minimum amount of energy. जैसे किसी भी काम करने के लिए एक ऑप्टिमम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी. लाइक यू नो, अगर हमें मार्केट से भी कोई सामान अगर लाना है तो वी नीड एमआरपी वैल्यू होती है, वो फिक्स है, उतना तो हमें चाहिए. तो सिमिलरली यहाँ इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड सम अमाउंट ऑफ एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी की नीड होगी. तो वो जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है हम उसको क्या बोलेंगे? थ्रेशोल्ड एनर्जी के नाम से बोलते हैं. तो थ्रेशोल्ड एनर्जी द ऑप्टिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन. थ्रेशोल्ड एनर्जी इज द ऑप्टिमम एनर्जी required for rejection of electron. When we talk about the energy, energy can be written as h dot nu zero. Got it? तो आप E नॉट को h dot nu नॉट के टर्म में भी लिख सकते हो. वर्क फंक्शन कैन बी रिटन एज h dot nu नॉट. नो, अब मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन की जब हम बात करेंगे तो व्हाट वी हैव टू राइट दैट एनर्जी रिमेन्स कंजर्व. गॉट इट? जो रेडिएशन हमारी यहाँ आकर के स्ट्राइक हो रही है, व्हाट इट? रेडिएशन व्हेन स्ट्राइक एट द सरफेस ऑफ मेटल, तो टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड इन 2 वे. यहाँ पे जो इसके पास हमने जूम किया था, लेट देयर इज 100 जूल. 100 जूल एनर्जी इज गोइंग टू कंज्यूम इन 2 वे. वन इज एज ए वर्क फंक्शन, जो बेसिकली इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट है. अनदर इज ए काइनेटिक एनर्जी, अनदर इज ए काइनेटिक एनर्जी. तो टोटल एनर्जी को इज गोइंग टू कंज्यूम इन 2 वे. जो टोटल एनर्जी 100 जूल है, उसमें से कुछ पोर्शन, सपोज करो कि यहाँ पे 60 जूल इज गोइंग टू कंज्यूम एज वर्क फंक्शन. The remaining kinetic energy should be how much? That is 40 joule. So you can see that 100 is equal to 60 plus 40. So we know the energy remains conserved. ये हमें पहले से मालूम है. According to thermodynamics, thermodynamics ये कहते हैं कि energy remains conserved. पूरी entire universe, you know, energy remains conserved. Energy remains conserved. Since energy remains conserved, we are going to apply this energy conservation law. Got it? Energy conservation law. When we talk about the energy conservation, then we can write that total energy of the incident radiation must be written as equal to the work function, sum of the work function plus kinetic energy. Very simple, आप देख सकते हो एनर्जी कंजर्व है.
जो टोटल 100 जूल एनर्जी दैट इज इक्वल टू सम ऑफ 60 प्लस 40, इसके ये बराबर है 60 प्लस 40 के। बट इट नाउ हम क्या करेंगे, वर्क फंक्शन को थ्रेशोल्ड एनर्जी से प्लेस करेंगे। अगर आपको वर्क फंक्शन के प्लेस पे क्या लिख देना है, थ्रेशोल्ड एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी प्लस दैट इज द काइनेटिक एनर्जी। नाउ दैट इज गोइंग टू बी टोटल एनर्जी। नाउ काइनेटिक एनर्जी अगर आपको कैलकुलेट करना है, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन कैन बी रिटेन एज, इन द न्यूमेरिकल आपको काइनेटिक एनर्जी अगर कैलकुलेट करना है बेटा, तो थ्रेशोल्ड एनर्जी को आपको टोटल एनर्जी से माइनस कर लेना है। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन विल बी रिटेन एज टोटल एनर्जी माइनस थ्रेशोल्ड एनर्जी, total energy minus the sold energy. And we already know that total energy is going to h nu. Total energy Planck quantum theory से निकाल लेंगे h nu, and the sold energy can be written as h nu naught, h nu naught, h nu naught। यहाँ पे हम लिखेंगे h dot nu minus h nu naught, h nu naught। Here we can see that h is common, तो आप h कॉमन ले लो, Planck constant कॉमन ले लेंगे, remaining is nu minus nu naught, nu minus nu naught। This is the फंडामेंटल फार्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी आपको कभी भी कैलकुलेट करनी है, आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन विल बी इक्वल टू एच इन ब्रैकेट न्यू माइनस न्यू नॉट, एच इन ब्रैकेट न्यू माइनस न्यू नॉट। व्हाट इट, एनी डाउट यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन हियर। where k is the kinetic energy of, where ke is this is the kinetic energy of photoelectron, kinetic, this is the kinetic energy of photoelectron, kinetic energy of associated with photoelectron, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है, बिकॉज इलेक्ट्रॉन इज अंडर द मोशन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। देन व्हाट अबाउट द एच, एच इज योर प्लॉन्क कांस्टेंट, एच इज योर प्लॉन्क कांस्टेंट, एच इज गोइंग टू बी प्लॉन्क कांस्टेंट, and we know that its value is how much, 6.626, 6.626 into 10 h power minus 34 joule second, that is how much joule second। Whenever you are going to use it, this will be also in mks। जब भी आप प्लॉन्क कांस्टेंट का न्यूमेरिकल लगाते हो तो मास हमेशा केजी में होना चाहिए। एंड हियर वी कैन टॉक अबाउट द यूनिट जूल की बात करेंगे तो जूल सेकंड में इसकी यूनिट आती है जूल सेकंड। नाउ व्हाट इज द न्यू, न्यू द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, that is the frequency of incident radiation, that is the frequency of incident radiation, frequency of incident radiation, frequency of incident radiation। now अगर आपको यहाँ पे निकालना व्हाट इज द न्यू नॉट, न्यू नॉट इज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, न्यू नॉट इज योर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, न्यू नॉट इज योर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। now न्यू नॉट इज गोइंग टू बी योर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, न्यू नॉट इज गोइंग टू बी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। and what is the threshold frequency, the minimum frequency of radiation, it is the optimum you can say, or minimum आप बोल सकते हो, the minimum frequency of incident radiation। जो आपके रेडिएशन है, जो सोर्स है, उसकी जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी होगी, that must be there so that electron can be ejected। the minimum frequency of radiation, minimum frequency of radiation, रेडिएशन की जो ऑप्टिमम फ्रीक्वेंसी होगी, that must be sufficient for ejection of electron। the minimum frequency of radiation, the minimum frequency of radiation that can
that must be sufficient, that can be used or that can eject electrons electrons from metal to metal surface, because metal is made of a multi layer, तो ये मेटल से निकलेगा, मेटल की सरफेस पे बैठ जाएगा. फ्रॉम मेटल अप टू मेटल सरफेस, फ्रॉम मेटल टू मेटल सरफेस, फ्रॉम मेटल टू मेटल सरफेस. If extra amount of energy remains, then that will be used as a kinetic energy. Got it? From metal to metal surface. Here you can see that, the soul frequency. Now, if we see this basic formula, you kinetic energy is equal H in bracket nu minus nu naught. You can elaborate little bit more. We know that nu is equal to C by lambda. ये हमें फार्मूला पहले से मालूम है. nu is equal to beta C by lambda. Nu is equal to C by lambda. And nu naught, तो सोल फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे तो that will be equal to C by lambda naught. The soul wavelength. Lambda naught की अगर बात करेंगे, what is this? This is the threshold wavelength. This is threshold wavelength. Threshold wavelength. This is the optimum wavelength, or value of wavelength that must be required for ejection of electron. This is the threshold wavelength. Threshold wavelength. Now you can write the formula again in term of lambda. अब lambda के term में formula लिखना है तो k, since k is equal to h in bracket nu minus nu naught. तो हमारा जो मेन फार्मूला था that was in a nu minus nu naught. हम यहाँ पे क्या करने जा रहे हैं, दोनों प्लेस में न्यू की जगह c by lambda, h will remains as such. जहां पे बेटा c by lambda लिख देंगे माइनस c by lambda नॉट. तो आप यहाँ देख सकते हो आपका कॉमन हो जाएगा, h और c बोथ आर कॉमन हियर. फाइनली हम यहाँ पे लिखेंगे h into c, that is going to be common 1 by lambda minus 1 by lambda naught. 1 by lambda minus 1 by lambda naught. One by lambda minus 1 by lambda naught. So this formula is also important for us while solving the numericals. Now, what is the basic, main points of this theory? As a whole, you can see that there is no time gap between the ejection of electron and radiation incident. As soon as radiation is going to strike at the surface of metal, ejection of electron takes place. तो आपको क्या बोलना है? There is no time gap. There is no time gap. No time gap. There is no time gap between इसके बीच में बेटा रेडिएशन इंसिडेंट रेडिएशन एंड इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन. अगर आपकी रेडिएशन इंसिडेंट जो रेडिएशन है थ्रेशोल्ड को मैच कर रही है, इंसिडेंट रेडिएशन एंड ejection of electron, ejection of photoelectrons. तो वहां पे कोई भी टाइम गैप नहीं रहता. इट्स वेरी साइमल्टेनियस फेनोमेना. एज सून एज रेडिएशन जाके वहां टकराएगी, एट द सेम मोमेंट इलेक्ट्रॉन आर गोइंग टू बी इजेक्टेड. तो देयर इज नो टाइम गैप बिटवीन दिस. ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आते हैं, लाइन हमारी आती है, हाउ टू which of the following statement are correct. So this statement is very important. There is no time gap between incident radiation and ejection of photoelectrons. अब जो सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूले की हम बात करेंगे, इसकी एनालिसिस करेंगे. काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू एच इन ब्रैकेट न्यू माइनस न्यू नॉट. नाउ द केस फर्स्ट केस की अगर हम बात करें, हमने जो फ्रीक्वेंसी अगर यूज की है
इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी अगर न्यू इज लेस देन न्यू नॉट, देन व्हाट विल हैपन? यू कैन सी दैट फार्मूले में न्यू माइनस न्यू नॉट है, वैल्यू आपकी नेगेटिव आएगी। एंड बी ऑलरेडी नो काइनेटिक एनर्जी बी नेगेटिव, बेटा ये कभी नेगेटिव हो नहीं सकती। इट मींस नो इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, नो इजेक्शन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, नो काइनेटिक एनर्जी, नो इजेक्शन ऑफ, नो इजेक्शन ऑफ photo electrons, no ejection of photoelectrons. So we will not talk about the kinetic energy की हम बात ही नहीं करेंगे. So no kinetic energy. तो बेटा kinetic energy की बात ही नहीं करनी. केस नंबर टू, केस नंबर टू की अगर बात करेंगे, इफ न्यू इज इक्वल टू न्यू नॉट, न्यू इज इक्वल टू न्यू नॉट, तो यहाँ पे हमारे पास जो इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी और थ्रेशोल्ड की मैचिंग है, जितनी की रिक्वायरमेंट है उतना है, तो इलेक्ट्रॉन विल बी इजेक्टेड विद नो काइनेटिक एनर्जी। तो हमारा जो बेसिक फार्मूला आप देख सकते हो, जो भी स्टेटमेंट देना ऑलवेज हमें फार्मूले से देना रहता है। तो यू नो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला था एच इन ब्रैकेट में न्यू माइनस न्यू नॉट। तो बेटा यहाँ देख सकते हो दोनों ये पैरामीटर हमारे सेम है, और दोनों सेम होने पे वैल्यू जीरो आ जाएगी। जीरो मल्टीप्लाई बाई द कांस्टेंट इज गोइंग टू बी फाइनली जीरो। इसका मतलब हमारी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? जीरो होगी। इन दिस केस इलेक्ट्रॉन विल बी इजेक्टेड, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा, जो मल्टी लेयर मेटल का जो सरफेस है वहां से इलेक्ट्रॉन निकल करके सरफेस पे आ जाएंगे भाई, नो काइनेटिक एनर्जी। हमारा स्टेटमेंट क्या होगा? इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड, इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड विद नो काइनेटिक एनर्जी, इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड फ्रॉम मेटल टू मेटल सरफेस, फ्रॉम मेटल टू metal surface, got it? From metal to metal surface with no kinetic energy, from metal to metal surface with no kinetic energy। हम kinetic energy की बात ही नहीं करेंगे। with from metal to metal surface with zero kinetic energy, got it? with zero kinetic energy, with zero kinetic energy, kinetic energy का जो magnitude होगा that is going to be zero। when we talk about the case third, in third case what we can do that radiation जो incident है उसकी frequency को optimum से आप बढ़ा दो। in that case what will happen? if incident radiation having high frequency, तो if कंडीशन हम देने जा रहे हैं इंसिडेंट रेडिएशन फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर देन न्यू नॉट, तो सोल से ज्यादा है, देन इलेक्ट्रॉन विल बी इजेक्टेड, इलेक्ट्रॉन विल बी इजेक्टेड। यहाँ पे हमें फोटो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे, करंट में प्रोड्यूस होगी, इलेक्ट्रॉन विल बी इजेक्टेड, इलेक्ट्रॉन विल बी इजेक्टेड विद सर्टेन काइनेटिक एनर्जी, with electron will be ejected with certain kinetic energy, with certain kinetic energy, electron will be ejected with certain kinetic energy, certain kinetic energy। Now you can see the graph, I mean, we have to remember little more points. कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन डिपेंड अपॉन द फ्रीक्वेंसी। बाय सीइंग द फार्मूला आप देख सकते हैं यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। फ्रॉम द फार्मूला यू कैन सी दैट काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। ये बेटा फ्रीक्वेंसी पे डिपेंडेंट है। लेकिन आपको अगर क्या निकालना है, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स अगर निकालने हैं, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा निकालने हैं, तो हमें इंटेंसिटी बढ़ानी रहती है। नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स अगर आपको ज्यादा निकालना है तो व्हाट वी हैव टू डू, आपके जो सोर्स है उसकी पावर बढ़ानी है, उसकी ब्राइटनेस बढ़ा देनी है। तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस एज intensity of the source increases, power of source increases, intensity, intensity
मतलब ब्राइटनेस की हम बात कर रहे हैं। इंटेंसिटी ऑफ सोर्स इंक्रीजेस, इंटेंसिटी ऑफ सोर्स इंक्रीजेस, इंटेंसिटी ऑफ द सोर्स इंक्रीजेस। नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इंटेंसिटी डिपेंडेंट हो गया, and kinetic energy depend upon frequency. Now if you plot a graph, अगर आप इसमें बेटा एक ग्राफ प्लॉट करते हो, now we plot the ग्राफ। अगर हम इसमें ग्राफ प्लॉट करते हैं, got it, what we can see here, now we plot the graph, we are going to plot a graph between graph of kinetic energy versus frequency, kinetic energy versus frequency. Now so we can see that, kinetic energy, we have to take two parameter, one is the kinetic energy, we can see one side that is the kinetic energy and the side is your frequency. तो एक्स एक्सिस पे आपको क्या रखना है बेटा, फ्रीक्वेंसी रख देना, एंड वाई एक्सिस पे आपको क्या रख देना, काइनेटिक एनर्जी। तो आप व्हेन यू प्लॉट द ग्राफ व्हाट विल हैपन व्हेन दिस फ्रीक्वेंसी इज गोइंग टू जीरो, तो काइनेटिक एनर्जी तो जीरो होना है, इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन नहीं हुआ, काइनेटिक एनर्जी का हम बात ही नहीं करेंगे, गॉट इट। अब मान लो आपने फ्रीक्वेंसी को धीरे धीरे बढ़ाया, 0 to 5, 5 0 to 50, 50 to 100, 100। तो ये पर्टिकुलर पॉइंट में मान लो थ्रेशोल्ड आ गया, लेट 100 इज योर थ्रेशोल्ड, तो ये जो 100 की लिमिट है इसको हमने क्या मान लिया, थ्रेशोल्ड मान लिया। नाउ इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड। अब आफ्टर दैट अगर आप यहाँ पे फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हो तो स्ट्रेट लाइन आपको ग्राफ मिलेगा, एंड आफ्टर दिस योर लाइन इज गोइंग टू बी स्ट्रेट, व्हाट इट। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इवेंट, line is going to be straight line। नो काइनेटिक एनर्जी से स्पीड भी आप निकाल सकते हैं इलेक्ट्रॉन की, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर। यहां से हम क्या निकाल सकते हैं बेटा, स्पीड निकाल सकते हैं, वी कैन फाइंड आउट द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, वी कैन फाइंड आउट द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, speed of electron can be calculated with the help of this formula। The last point of this theory is very important, that is the stopping potential। What is the stopping potential, what is the stopping potential? We are going to discuss that particular point, what is the stopping potential, what is the stopping potential। Stopping potential, got it। We are going to discuss the last point of this theory, that is the stopping potential। Stopping potential is denoted by stopping potential, that is denoted by capital V, नीचे आपको नॉट लगा देना, बी नॉट, बी फॉर वोल्टेज। नो पीछे हमने क्या देखा था, दिस वाज द कैथोड प्लेट, वी हैव ऑलरेडी हमने देखा था कैथोड की प्लेट है, कैथोड की प्लेट पे क्या चार्ज होता है बेटा, नेगेटिव, और आपने यहाँ पे रेडिएशन इस पे गिराया, तो as soon as radiation is coming from any source on the cathode plate, electron ejected from negative terminal and that moves towards the positive terminal। हमारे सामने जो यहाँ पे टर्मिनल था, that was positively charged, but not what we want that कि ये सर्किट यहाँ कंप्लीट ना हो, we want that कि इलेक्ट्रॉन का एनोड की प्लेट पे जाना रुक जाए। what we have to do, we will connect this electrode with another source, बैटरी के दूसरे सोर्स से कनेक्ट कर दो, that is going to be negatively charged, got it, that is going to be negatively charged, then what will happen, this plate is going to be negatively charged, और आपको क्या करना है, वोल्टेज बढ़ाते जाना है। द टाइम विल कम, जैसे नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आएगा तो नेगेटिव नेगेटिव को क्या करेगा, दे आर गोइंग टू रिपेल, दे आर गोइंग टू रिपेल। तो आपको क्या करना है, वी हैव टू अप्लाई द पोटेंशियल डिफरेंस, अपोजिट चार्ज मीन्स नेगेटिव चार्ज ऑन द एनोड प्लेट, एनोड की प्लेट जो पॉजिटिवली चार्ज थी उसको मैन्युअली हम कनेक्ट करेंगे सर्किट से नेगेटिव सोर्स से, तो ये नेगेटिव हो जाएगी। उसके लिए आपको क्या करना है, वोल्टेज आपको बढ़ाते जाना है।
फाइनली द टाइम विल कम दैट इलेक्ट्रॉन का जो रीच आउट था प्लेट पे आना क्या होगा, बंद हो जाएगा, दे आर गोइंग टू स्टॉप। दिस फेनामेना इज नोन एज, दिस पॉइंट इज नोन एज ये जो वोल्टेज आप अप्लाई करोगे दैट इज नोन एज स्टॉपिंग पोटेंशियल। अब कितना वोल्टेज लगाना होगा डिपेंड अपॉन स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन कितनी हाई स्पीड से एनोड की तरफ अप्रोच कर रहा था। तो मोर द काइनेटिक एनर्जी मोर द हाई वोल्टेज रिक्वायर्ड। काइनेटिक एनर्जी, जैसे कोई कार अगर हाई स्पीड में आ रही है तो आपको ज्यादा पावर लगानी पड़ेगी रोकने के लिए। तो काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोल सकते हो ये वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, वी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्टॉपिंग पोटेंशियल के। गॉट इट। तो आप यहाँ पे फाइनली क्या करेंगे, प्रोपोर्शनलिटी हटा के हम यहाँ पे चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन एज ए कांस्टेंट यूज करेंगे, दैट इज नोन एज ई डॉट वी नॉट। और इस कॉन्सेप्ट का क्या काम है, जब भी तुम्हें स्टॉपिंग पोटेंशियल गिवन है, इस फार्मूले से हमें क्या करना, दिस फार्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर। न्यूमेरिकल लगाना है अगर आपको तो इसको लगाना हमें याद होना चाहिए कि अगर आपको कभी भी पोटेंशियल गिवन हो, एक्सेलरेशन पोटेंशियल गिवन हो, स्टॉपिंग पोटेंशियल गिवन हो, तो काइनेटिक एनर्जी को कोरिलेट कर सकते हो। इन द ब्रॉड सेंस काइनेटिक एनर्जी क्या होगी बेटा, क्यू डॉट बी भी हो सकती है। चार्ज अगर आपको वेरिएबल है, आप वहाँ क्यू डॉट बी भी यूज कर सकते हो। इलेक्ट्रॉन अगर है तो ई डॉट भी लगा देना। व्हाट इट। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सपोज करो मैंने आपको एक छोटी सी प्रॉब्लम दे दी, इफ वोल्टेज, मतलब अगर आपको वोल्टेज गिवन हो, एक्सेलेरेशन पोटेंशियल गिवन हो, वोल्टेज कौन सा दिया हो, स्टॉपिंग पोटेंशियल का वोल्टेज इज 2 वोल्ट, व्हाट विल बी द काइनेटिक एनर्जी। आपने इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट कर दिया 2 वोल्ट में, गॉट इट। तो हमें यहाँ पे बताना है काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। तो काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज प्रोडक्ट ऑफ ई डॉट बी। इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी की अगर हम बात करेंगे तो दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ ई डॉट बी सिंपली। तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम मल्टीप्लाई बाई 2 वोल्ट। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, दैट इज हाउ मच, 3.2 इंटू 10⁻⁻19 जूल। दैट विल बी द कूलम को इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में ले जाना, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई कर देना। तो इसको अलग से याद करके रखना है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻19 जूल। थैंक यू एवरीवन, solve the problems on this topic, prepare it well, and come for the doubts. Good evening and good night.